अगर आप नॉर्मली कोई इंटीग्रेटेड सर्किट देखते हो, जैसे कि ये भी एक चिप है, एक सिंगल चिप पे, सिंगल इंटीग्रेटेड सर्किट पे हम लोग ये सारे एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो जो सप्लाई है, जो करंट सप्लाई है, जो एक्टिविटी क्राइटेरियाज है, इट इज वेरी यूनिफॉर्म. लाइक if I need only 5 plus minus 5 voltage, you know the electricity what at home we have, it is more than that. So अगर 5 voltage का requirement है मदरबोर्ड को सप्लाई करने का, और we are providing much amount of electricity supply or a current supply or an energy supply, we rather say extra amount of things are always noise. Okay, so you can actually explain these things are extra supply to the motherboard with the electricity pattern which is required is 5 volt only. अगर more than that जा रहा है तो उसे noisy consider किया जाए. Because of that fluctuation, मशीन अपने आप में बैलेंस करती है कुछ टाइमिंग्स, कंट्रोल्स, रीड, राइट एंड इंटरप्ट कंट्रोल्स. So we need to understand some keywords. क्लॉक के लिए CL के वर्ड यूज किया है, इंटरप्ट के लिए INTR यूज किया है. We are having in between diagram below आप देख सकते हो +5 voltage पावर सप्लाई दिख रहा है सबको. कैन यू सी द डायग्राम के एंड में, सेंटर में, क्लॉक एंड इंटरप्ट कंट्रोल के सेंटर में यू कैन सी +5 voltage. Yes, are you able to see that? So you can see the amount of supply, power supply needed is only 5 volt. And the extra amount of power supply is getting very well managed in this circuit because motherboard itself is programmed to get whatever amount of things required. So generic microprocessor में जो points आपको explain कर रहे हैं, one after the other I will tell you. You can see here the criteria is how things are utilized. तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि I have shown you accumulator part, but before going to that, there is one particular word which is very much important, is adder. Now why adder? Because if I say adder is to be explained, there are varieties of mathematical and logical calculations are going to happen. So generic processor का जो base है student, the base is activity oriented. आप जो भी activities करोगे वो activities को identify किया जाएगा. उसमें mathematical activities भी हो सकती है and logical activities भी हो सकती है, and then on to which we are going to proceed with other criteria. तो accumulator मैंने बोला था एक point आ जाएगा accumulator का, temporary registers का, shifters. अभी shifters में कैसा है, आप operations में decide कर सकते हो. You can decide actually LHS, RHS criteria for logical decision making. So if you want to have a shifter, you can have adders also, you can have shifters also, and you have a status register. Status register आपको बताता है कि which particular things are going on inside ALU. ALU में exactly अभी operation कौन से end तक पहुंचा है, कौन से activity चल रही है, वो सारी चीजें explain की जाती है in terms of criteria. So you can have some componental concept. अभी componental concept में buses भी मैंने बोला था student कि address bus is one of the part which is unidirectional. Unidirectional क्यों बोला है address bus को? Because address bus movement नहीं करता है student, क्योंकि उसे सिर्फ एक particular data receive होता है. तो एड्रेस का फ्लो या फिर एक पर्टिकुलर एड्रेस को आइडेंटिफाई करने के लिए मोर देन वन डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज उसे ट्रैवल नहीं करना है, डेटा लेके घूमना नहीं है, बट डेटा बस को ट्रैवल करना है. सो दैट इज बाई डायरेक्शनल. ये पॉइंट आना चाहिए आंसर में कि एड्रेस बस इज यूनिडायरेक्शनल. इट कैन ओनली यूज टू ट्रांसफर द एड्रेस फ्रॉम वन पार्ट ऑफ माइक्रोप्रोसेसर टू अनदर. ये जो सेंटेंस है ये एक्सप्लेन करता है एड्रेस बस की क्वालिटी. So it is used to transfer address bus from one part of the microprocessor to another part. And data bus में क्या explain किया है? It is bidirectional. That is, data can flow in both the direction with the data bus. So data bus is called as traveler. Data bus data लेके जाती है, accumulator के पास से data लेती भी है और accumulator में बाद में answer send भी करती है. So this is something called as capacity also. इसके ऊपर MCQs भी form होते हैं, like what is the capacity of data bus? What is the capacity of address bus? So while writing answers, please note it down in a simplest way so that in a lecture itself you will get some points and you are preparing for the examination, that is board examination or any examination that you are appearing. Sensible answers, proper answers, technical explanation is required. We cannot write anything else that we understood. The perception of understanding microprocessor for everyone is different. But you need to understand one thing, ki how to write answer.
तो 4 मार्क्स के लिए जो पॉइंट्स लिखने वाले हो उसमें बसेस आने चाहिए, उसमें टेम्पररी रजिस्टर्स आने चाहिए, उसमें एक्यूमुलेटर आना चाहिए. Then you need to explain some type of address shifters and control जो है टाइमिंग कंट्रोल वो भी एक्सप्लेन करना आपको स्टूडेंट. यू कैन सी हियर देयर आर सम डायग्राम में जितने भी कंपोनेंट्स है वो एक्सप्लेन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा हाउ टू go into that particular criteria. Just if you have any particular doubt till now, you can put in a chat box. Yes? Are you understanding what type of working is there in the generic microprocessor? How this particular base of microprocessor series is developed on the basis of generic one. So generic is the first one taken as a reference. Generic को reference पकड़ते हैं और उस reference के basis पे वो लोग microprocessor design करते हैं. Okay? Are you understanding? Just confirm me in the chat box. If you have any doubt also you can ask. See, stack pointer is basically to get understanding of which process is now going for the receiving end by the data bus, and now what type of things are completed and answer is going to come in the accumulator. So आपको अगर फाइनल कंफर्मेशन करना है कि कौन सी चीज प्रोसेसिंग के लिए जा रही है तो वो पॉइंटिंग आउट किया जाता है बाय द स्टैक पॉइंटर. स्टैक पॉइंटर एक टाइप का नोटिफिकेशन अलार्म है जो प्रोसेसर्स को आइडेंटिफाई करके उन्हें नोटिफाई करता है कि अभी एग्जैक्टली सीपीयू के अंदर कौन सी प्रोसेस काउंटर पार्ट में है, कौन सी प्रोसेस अंडर एग्जीक्यूशन में और प्रायोरिटी में. So priorities can be explained very well by stack pointer. Okay. Just if you have any doubt, you can put in a chat box. Understood? Yes or no? Chart में in the diagram, if you are saying diagram वाला part. You want me to explain diagram? Okay. I will again explain diagram. Just see how to understand this particular criteria of diagram. डायग्राम में सबसे पहले आप अगर कॉन्सेंट्रेट करते हो तो आपको स्टार्टिंग में एक्यूमुलेटर को कॉन्सेंट्रेट करना है बिकॉज इनपुट रिसीवर कौन है? एक्यूमुलेटर. ठीक है. एक्यूमुलेटर में से जो भी डेटा आएगा वो कितनी कैपेसिटी का होगा? 8 बिट का. सो इमीडिएटली दिस 8 बिट्स आर रिसीव्ड बाय डेटा बस. तो डेटा बस ने एक्यूमुलेटर का डेटा रिसीव किया, देन ये डेटा टेम्पररी रजिस्टर्स में गया. टेम्पररी रजिस्टर्स में जो डेटा गया है वो आगे एएलयू के पास सेंड किया गया फॉर माइट बी एनी ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी डिसाइड हुआ है वो तरीके का डेटा यहाँ पे सेंड हुआ है. तो माइट बी एक्यूमुलेटर फर्स्ट टाइम पे सपोज ए इज इक्वल टू 10 है तो ये जो 10 वैल्यू है वो एक्यूमुलेटर में सबसे पहले आएगी. ये 10 वैल्यू जो है वो 8 बिट वाली अपनी जो डेटा बस है वो लेके जाएगी एएलयू में, फिर एक्यूमुलेटर फ्री हो जाएगा. ठीक है. फिर सेकेंड इनपुट आएगा बी, वो वाली वैल्यू भी डेटा बस लेके जाएगी एएलयू के पास. अभी एएलयू में कौन से पर्टिकुलर
सुमन 1 मिनट सर का थोड़ा लाइट का इशू है, आ रहा है सर। Hello. Okay. We'll continue. Being understood in the microprocessor architecture. It is still a bit complex in series of microprocessors, but we need to understand in a assembly language criteria. It is very tough to understand what type of wordings are there. So you need to be very dedicated with what type of terms and conditions are there in the programming criteria. और वो आपको daily basis पे practice करना पड़ेगा. Otherwise, what will happen if you are directly going to put some efforts in terms of just looking into that diagram? You need to draw that diagram once. Then you will come to know how this diagram is going to actually maintain. Every diagram is different. Every diagram has got some sequence. So I will just explain that sequence because this is very much important while writing answer related to this. आपको पता होना चाहिए कि हम क्या explain कर रहे हैं in the generic microprocessor and क्या explain कर रहे हैं actual microprocessor series में. Okay, just a minute. I will again share that particular part so that you will get understanding. Just a minute. Okay, now coming to the point, when you want to write answer related to this, what type of things you are going to explain, what type of interrupts are there, what type of activities are there, these are all important aspect of learning. So you can expect actually 3 or 4 marks of question for this particular criteria, that is explain microprocessor, generic microprocessor block diagram. Okay, this is the prominent question out of the box. In this chapter, there is no separate kind of question is there. So you can easily see what type of fundamental explanations are there. So this is very much important that how you are going to explain this particular part. Now, if you see, it is very much important for you to write answering criteria in a clear way. So just a minute, I will ask sir to make co-host to me because the laptop I need to have screen sharing is disabled now because of my network disconnectivity. Just give me 1 minute.
Okay. Till the time you can send me your doubts in the chat box. I will explain you. Any doubt to anyone? You can type your messages in the chat box. Okay, see, in a college level, when the exam is going to conduct, these people are going to conduct examination at unit test level or a semester level. Definitely, the marking pattern they can improvise because whenever the 50 marks examination is conducted, they have some scope. Whenever the 2 marks question is asked out of this, in the board examination, definitely this particular criteria of weightage is 3 to 4 marks. But if 2 marks question is asked according to your college criteria scenario, then try to understand they are framing questions in such a way that how priorities to the topics are given according to the point of unit test examination or any examination what they are conducting. So one thing it is very much important. Whatever I am explaining is definitely according to the board criteria. बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस फ्रेम किया जाता है उसका वेटेज एंड उसका रिफ्लेक्शन जो है मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको. So please take it into that account कि how I am going to prepare this particular topic. And the weightage itself will tell you the dominance of the topic. So whatever you are going to prepare, please understand it in a context of learning. So if you are getting this particular fundamental to be studied, the minimum weightage is 3, the maximum weightage is 4 because diagram plus explanation, definitely the diagram itself has got so many components. तो उस particular criteria में explain नहीं करना है हमें. 2 marks के लिए even not 1 or 2 fundamentals you can explain of this question. तो आप ज्यादा से ज्यादा 2 मार्क्स के लिए जेनेरिक माइक्रोप्रोसेसर होता क्या है वो लिख सकते हो और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में उसके लिख सकते हो जैसे कि एक्यूमुलेटर या फिर डेटा बस. ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स उसमें 2 मार्क्स के वेटेज में आएंगे नहीं. बट इफ यू सी 3 marks and 4 marks criteria, definitely you have to explain few of the elements. Diagram you can draw, definitely diagram will give you transparency, but diagram itself cannot be for 3 or 4 marks. So please understand this classification and marking scheme that we need to understand. Okay, so this question or this topic, please write it down, this topic name and weightage 3 marks to 4 marks. Okay, this cannot be asked for the 2 marks, but for time being, like unit test, whatever is conducted by the college, they can frame this. Actually, they have a freedom to get some topic revised in a quickest manner. So according to that, they can frame to make this particular topic comfortable. Okay, तो ये हो सकता है कि आपको 2 marks का मिले, 3 marks का मिले, थोड़ा variation मिले यार college to college. But teacher want you to get this particular topic explained because ये एक ही topic ऐसा है जो कंपलसरी आपको आना ही आना है एग्जामिनेशन में. ओके, any other doubt related to that? Okay. I hope at least basic introductory part of that explanation you are understanding. Diagram is bit complex. I will make you comfortable in the diagram. But जब ड्रॉ करोगे डायग्राम्स तो कंपोनेंटल डायग्राम ड्रॉ करते हो क्या पहले ड्रॉ करना है, कैसे डायग्राम को मेमोराइज करना है, वो चीजें मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ. जस्ट अ मिनट.
ओके, सो कमिंग टू द डायग्राम, डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है, कैसे मेमोराइज करना है, वो पहले देख लेते हैं। ओके, बिकॉज 3 to 4 मार्क्स का टॉपिक ऐसे ही आपका आपका स्किप नहीं होना चाहिए, फिर कोई गलत चीज वहां पे एक्सप्लेन नहीं होनी चाहिए। ओके, दैट इज वन ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जस्ट गो इन टू द डायग्राम सिनारियो, डायग्राम को एक बार पहले गो थ्रू कर लो, क्या क्या कॉन्सेंट्रेटिंग पॉइंट्स है, क्या क्या क्राइटेरियाज हमें एक्सप्लेन करने हैं। अभी इसी डायग्राम को मैं आपको सिंप्लीफाई करके एक्सप्लेन करने के लिए बताऊंगा कैसे करना है, कैसे ड्रॉ करना है आपको एग्जाम के लिए। डोंट जस्ट सी दैट पर्टिकुलर डायग्राम, बट उसको मेमोराइज करते हुए कैसे आपको करना है। ठीक है, फ्लो में पहले बता देता हूँ, फिर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आपको ड्रॉ करना है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर के एग्जैक्टली ऊपर टेम्पररी रजिस्टर्स होगा और एक्यूमुलेटर के राइट हैंड साइड में डेटा बस होगी। ठीक है, तो जहां से एक्यूमुलेटर आपको कनेक्ट करना है, टेम्पररी रजिस्टर्स कनेक्ट करना है, वो एडर को कनेक्ट करना है। अभी एडर, स्टेटस रजिस्टर एंड कॉम्प्लीमेंटर जो भी है, एडर शिफ्टर भी आप लिख सकते हो, ये सारी चीजें एएलयू के बॉक्स के अंदर आएंगी। सो एएलयू एक्चुअली इज द डेस्टिनेशन वेयर प्रोसेसिंग इज गोइंग टू हैपन फॉर अ मैथमेटिकल एंड लॉजिकल पार्ट। ठीक है, तो पहला पार्ट आपको जो ड्रॉ करना है डायग्राम में, या तो एएलयू ड्रॉ कर लो, एक्यूमुलेटर ड्रॉ कर लो, टेम्पररी रजिस्टर्स ड्रॉ कर लो और डेटा बस। ओके, तो ये पार्ट आप डायग्राम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करो। ऊपर के पार्ट में आपको ये वाली एक्टिविटी शो करना है, एंड नेक्स्ट पार्ट जो दिख रहा है आपको, उसमें प्रोग्राम काउंटर दिख रहा है, स्टैक पॉइंटर दिख रहा है, देन यू हैव इंस्ट्रक्शन डिकोडर एंड रजिस्टर विच आर कनेक्टेड टू टाइमिंग कंट्रोल। ठीक है, एंड एड्रेस बस जो है आपको एएलयू के स्टेटस रजिस्टर को कनेक्ट करना है, एंड जो एड्रेस बस कनेक्ट करना है वो आपको डायरेक्टली टाइमिंग एंड कंट्रोल को कनेक्ट करना है। ठीक है, सो विल जस्ट हैव दिस डायग्राम टू बी ड्रॉन। पहले देख लेते हैं हाउ टू डील विद दिस डायग्राम। ओके, जस्ट यूज दिस पार्ट। ठीक है, नाउ what we need to draw first is the accumulator. Okay, यहाँ पे मैं शॉर्टकट्स में ए करके यहाँ पे लिख देता हूँ accumulator AC। ठीक है, accumulator, accumulator के बाद यहाँ पे आप पहले ड्रॉ करके रखोगे एक पर्टिकुलर कनेक्टर। डायग्राम, my diagram cannot be that good, but you can draw with the simultaneous criteria। आप भी ड्रॉ कर सकते हो, चाहिए तो आपको अगर रिवाइज करना, मेमोराइज करना है तो इसके साथ कर सकते हो। ठीक है, then on to which here you can have ALU। ठीक, to have ALU। ठीक है, एग्जैक्टली एक्यूमुलेटर के साइड में, राइट हैंड साइड में यू कैन हैव डेटा बस। आप भी साइमल्टेनियसली सब लोग ट्राई करो, ड्रॉ करो, so that you can remember all these things। Then you have exactly here, ठीक है, टेम्पररी रजिस्टर। ठीक है, and then these all things that you are going to connect, there is one more criteria here is adder। इसके अंदर आपको 3 चीजें परमानेंटली दिखानी है, एडर, शिफ्टर। ओके, यहाँ पे आप शिफ्टर ड्रॉ करोगे, यहाँ पे उसको शॉर्टकट में एस लिख रहा हूँ, SH, दैट इज शिफ्टर।
एंड देन ऑन टू विच यहाँ पे एड्रेस बस ड्रॉ करना है। ठीक है, एड्रेस बस का जो कनेक्शन है डायरेक्टली टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट को देना है। यहाँ पे WR राइट ऑपरेशन एंड यहाँ पे रीड ऑपरेशन। ओके, मैं शॉर्टकट में यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे टाइमिंग एंड कंट्रोल। ठीक है, ये दोनों को डायरेक्टली आपको यहाँ पे डिकोडर्स यूज करना है। Okay, and then some shift registers are there, shift decoders are there, वो भी यहाँ पे नीचे आप ड्रॉ कर सकते हो। यहाँ पे स्टैक पॉइंटर एक ड्रॉ करना है आपको। यू आर हैविंग स्टैक पॉइंटर। नाउ जब कनेक्टिविटीज देते हो स्टूडेंट, तो एरोज जो है वो रिवर्सिबल आपको दिखेंगे, दोनों डायरेक्शंस में एरो दिखते हैं नॉर्मली। और यहाँ पे जब एड्रेस बस लिखोगे ना, वहाँ पे 16 बिट लिखना है आपको, एंड डेटा बस के बाजू में 8 बिट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में। ना अभी जितना भी डायग्राम मैंने ड्रॉ किया उसमें कहीं पे भी आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। यस, डायग्राम ड्रॉ करते वक्त आपको मेमोराइज कुछ नहीं करना है, आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि कौन सी चीजें पहले डायग्राम में ड्रॉ करें। देन यू कैन हैव कनेक्टिविटीज, इवन यू कैन सी द रेफरेंस डायग्राम आल्सो। ओके, कैन यू सी दिस? while I am making, you can also make in that terms of criteria. Yes, just see the diagram. आपको अभी तक जितना ड्रॉ किया समझा है? You can message me in the chat box. You can take reference again of the same thing. देख लो आप लोग, very easy to remember also and easy to draw. तो कोई भी सेगमेंट को आप मगअप मत करो, इजीली ड्रॉ कर सकते हो आप कोई भी कॉन्सेप्ट को। एंड मेन ब्लॉक्स को पहले नोटिफाई करना आपको, देन द कनेक्टिविटी कम्स। कनेक्टिविटी में आप देखोगे कि इंटरनल बसेस से ऑल द क्राइटेरियाज आर कनेक्टेड, बिकॉज वो